Good morning, my dear students. Welcome to the class. And as I have already told you in the introduction, that today we are beginning with the chapter 8 of your book Vistas, and this is Memories of Childhood, two autobiographical accounts of two female writers, Zitkala Sa and Bama. Now, I have already told you about these two females, but to begin with, when we have the first story written by Zitkala Sa, the first autobiographical account of her childhood, I would like to stress here on the Carlisle Indian School. Now, see, I have already briefed you that Zitkala Sa was the pen name of Gertrude Simons Bonnen, and she was a Native American woman. And in 1900s, she began publishing articles criticizing the Carlisle Indian School. Now, this Carlisle Indian School has played a very important role because this entire account of her childhood belongs to this particular place, the Carlisle Indian School. It was a boarding school. Now, if you Google this, the Carlisle Indian School, you would find that it was established in 1879 and it was run by General Henry Pratt. So the basic idea of this Carlisle Indian boarding school was to forcibly take up around 10,000 Native American children from over 140 tribes with the belief that they would enable children to advance themselves and blend in the European American culture. So they believed that the only way they can train these children to be like Americans is by putting them in this Carlisle Indian School. It was a boarding school and it was run by General Henry Pratt. And things at this boarding school were not very good, because the first thing that was done here was that the hair was shingled, and there was a lot of harsh punishment if any of the students over there did anything that belonged to his particular native culture or native tribe. So basically, General Henry Pratt had this slogan that kill the Indian and save the man. So basically they wanted that anything that is native Indian in these children should be like completely finished. It should be abolished and they should just be like Americans. So the Carlisle Indian School had lot of controversies. It had lot of movement thereafter, which was run by the people over there. And then finally, people came to know about the atrocities that were taking place over there towards these children. And the things that were done to these children had led to a lot of psychological, impact, which had disturbed their lives for a very, very long time. So, the first autobiographical account is by Gertrude Simon Bonnen, who runs her written pieces with the pen name Zitkala Sa. And the title of the first account is The Cutting of My Long Hair. Now please, before I get into the details of the explanation, you need to understand that we are looking into a particular tribe. So they are like, Red Indians, the Native American Indians. And these are not like pure Americans in race, but because they are in America, their native land is different. So definitely their culture is different, their habits are different, their traditions are different. So in the account of Zitkala Sa, hair holds a lot of importance because, as I had briefed you, sporting of different kinds of hair had always come up with a meaning behind it. And cutting of long hair was not just a good sign. It was a sign of cowardice. So how this account revolves around Zitkala Sa's long hair,
And please understand that Zitkala Sa too was forcibly taken to the Carlisle Indian boarding school. She was forcibly taken from her parents and she was put in this boarding school so that she could be trained and groomed to be like a proper pure American. So this is Zitkala Sa's, this entire account here is Zitkala Sa's experience of her first day at the Carlisle Indian boarding school, where she is forcibly taken, and what kind of atrocities she will be facing and how it affects her psychology, how it breaks down her spirit, and how it affects her physically and mentally and emotionally and socially. Okay, children? So here let's begin with the line-wise explanation of the first account. Today we will be doing the first account. So this is by Zitkala Sa, The Cutting of My Long Hair. The first day in the land of apples was a bitter cold one. This is America, and bitter cold one obviously. For the snow still covered the ground and the trees were bare. It was very cold, the snow was covering the ground and the trees were bare, matlab they had shed their leaves. Now she will start giving you whatever is happening in the boarding school. A large bell rang for breakfast. So ab kya hua? They are in the boarding school. Zitkala Sa is also there. And a bell rang, and it was a large bell. Okay, its loud metallic voice crashing through the belfry overhead. Now belfry is a tower, a long tower in which the bell is hung, and into our sensitive ears. So kya hua? A large bell rang, and this bell rang as an indication for the time for breakfast. The annoying clatter of shoes on bare floors gave us no peace. Now see, she starts giving you details of whatever was happening in this boarding school. So one thing we come to know, that whatever meal timings apparently these people have, they are informing them through bells. Tick. And then she says the annoying clatter. Annoying मतलब बहुत irritate करने वाला. So shoes on the floor, the clatter of shoes on the bare floor. तो shoes on the bare floor as in के shoes की आवाज जब आप चलते हैं, and it gave them no peace. That means because constantly children were moving around and they were wearing shoes, and that clatter was giving them no peace at all. The constant clash of harsh noises with an undercurrent of many voices murmuring an unknown tongue. Now what is this unknown tongue? This unknown tongue refers to English. So there are a lot of harsh noises. Please pay attention here. Okay, I will underline here it for you. There are a lot of harsh noises, she says. There is annoying clatter of shoes, and there is a lot of murmuring, धीरे धीरे बात करना है ना, in an unknown tongue. And all this had created a bedlam within. Bedlam is like a confusion. Within matlab within the body, within which I was securely tied. And here Zitkala Sa says that it is all because of these harsh noises and everything that a bedlam was created inside of her. And in this bedlam, she found herself securely tied. And though my spirit tore itself in struggling for its lost freedom, all was useless. Please understand, this is important. She's saying my spirit was tearing itself. It's like कि आपको ज़बरदस्ती कोई बोर्डिंग स्कूल ले जाता है और आप नहीं जाना चाहते हैं. And especially when you know that this particular boarding school has got nothing to do with your culture, with your practices, with your religion, with your way of life, with your lifestyle, nothing at all.
तो जबरदस्ती बेटा इन बच्चों को खींच करके घसीट करके लाया जाता था इन दिस कार्लाइल बोर्डिंग स्कूल, जस्ट टू ग्रूम देम टू बी लाइक अमेरिकन्स, ताकि इन लोगों को एडजस्ट करने में प्रॉब्लम ना हो। तो बट जब आप इस बात को सुनते हैं तो लगता है कि हाँ चलो ठीक है, एटलीस्ट दे आर हेल्पिंग देम टू जेल वेल in the American culture. But then it was not like that. Everything done here was with lot of force, with lot of strict rules, with harsh punishments, and these people treated these children as they were like prisoners. So this girl, Zitkalasa, of course she was a little girl then, her spirit was crying for freedom. It was struggling for its lost freedom. Freedom तो खो गया था ना, क्योंकि जबरदस्ती अब आपको इस बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया गया है. सो दिस इज द फर्स्ट इंट्रोडक्शन दैट शी गिव्स अस हियर. लेट्स सी नाउ व्हाट हैपेंस. अ पेल फेस वुमन विद वाइट हेयर केम अप आफ्टर अस. अब इनके पीछे पीछे एक पेल फेस वुमन विद वाइट हेयर, शी वाज फॉलोइंग देम. वी वर प्लेस्ड इन अ लाइन ऑफ गर्ल्स हु वर मार्चिंग इनटू द डाइनिंग रूम. तो ऑफ कोर्स जितकलासा के साथ कोई और भी है, एक लाइन है गर्ल्स की और उसी लाइन में इनको भी लगा दिया. एंड दे आर ऑल मार्चिंग इनटू द डाइनिंग रूम. और क्यों जा रहे हैं डाइनिंग रूम में? फॉर ब्रेकफास्ट. दीज वर इंडियन गर्ल्स. अब ये जो गर्ल्स थी इन द लाइन, दे वर इंडियन गर्ल्स. नाउ जितकलासा वाज नॉट अ ट्रू इंडियन गर्ल, शी वाज एन अमेरिकन इंडियन, लाइक रेड इंडियंस. ठीक है, दे आर नॉट प्योर इंडियंस इन रेस. These were Indian girls, और Indian girls का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ है. कैसा है? These were Indian girls in stiff shoes, tight shoes, and closely clinging dresses. Now these dresses which these Indian girls are wearing, they are very tightly hugging to their bodies. And the small girls wore sleeved aprons, और जो छोटी लड़कियां थी, they were wearing sleeved aprons and shingled hair. Please highlight this word shingled, because the whole account is revolving around this one word that is associated with the cutting of the long hair, and it is shingled. Now what is shingled hair? Shingled hair is beta जब आपके बाल काटते हैं with uneven ends. I am going to send you pictures in the class group. You will come to know कि कैसे shingling होती थी, इन बच्चों के बाल काट देते थे बिल्कुल, and how they used to look. So I will send you few photographs from the internet in which you will see they are actual photographs of the Carlisle Indian School, the students before and after the shingling. Okay, so these Indian girls, they were in stiff shoes. They were wearing very clinging dresses, very tightly fitting dresses to their body. Obviously, these girls would not be feeling comfortable in them. And then what Zitkalasa noticed was that the hair was shingled. It was unevenly cut. As I walked noiselessly in my soft moccasins. Now see, I have again highlighted this word over here. Now moccasins क्या है बेटा? देखो इन सब ने तो shoes पहने हैं. Moccasins क्या होते हैं? I have written it over here. Moccasins are a traditional native North American shoe. ये बड़ा ट्रेडिशनल शू होता है, इसका भी मैं आपको इमेज भेजूंगी. ठीक है, इट इज अ टिपिकल नेटिव नॉर्थ अमेरिकन शू. इट डज नॉट हैव अ हील और अ सोल, एंड इट इज मेड आउट ऑफ सॉफ्ट लेदर और डियर स्किन. बहुत सॉफ्ट होता है, इसमें कोई हील नहीं होती है, एंड एम्ब्रॉयडरी वगैरह इस पे होता है. So, because Zitkalasa was a Native American woman, a Native American girl, so she was wearing her moccasins. But आगे आप देखेंगे कि उसके moccasins भी ले लेंगे, क्योंकि बाकी सब लोगों ने क्या पहना है? शूज पहना है. और इन्हीं शूज के बारे में यहाँ बात हो रही थी कि इन शूज से बहुत आवाज आती थी. And there used to be a clatter of shoes, which gave them no peace of mind. Okay? I felt like sinking to the floor. और वो बोलती है कि I felt like sinking to the floor. Why does she feel like sinking to the floor? For my blanket had been stripped from my shoulders. जो एक ब्लैंकेट उसके पास था, जिसने उससे अपने आप को कवर करा हुआ था, वो ब्लैंकेट उससे ले लिया था.
and obviously she is feeling very uncomfortable, because whatever Zitkalasa is wearing, she is not happy with that. Okay. I looked hard at the Indian girls, who seemed not to care that they were even more immodestly dressed than I. There is a word over here, immodest. Something that is not modest, something that is not, very appealing to the eyes, something that is not very appropriate. So obviously whatever Zitkalasa was wearing, she was not happy with that. But वो Indian girls को देख के ज़्यादा परेशान हो रही थी, क्योंकि उनकी dresses ज़्यादा clinging थी, और उनको देख के ज़्यादा लग रहा था कि यार इनके कपड़े तो मेरी वाली ड्रेस से भी ज़्यादा बुरे हैं, because they were like tight dresses, okay, body hugging dresses, and these girls were not comfortable in them. Okay, so what do we come to know here? There is a word over here, tightly fitting clothes. So the girls are in tightly fitting clothes, they are wearing shoes, the small girls are wearing sleeved aprons, and we come to know that their hair has been shingled. अभी Zitkalasa के moccasins नहीं लिए हैं, और अब तक Zitkalasa के hair के साथ भी कुछ नहीं हुआ है. Okay, so please bear that in mind. While we marched in, the boys entered at an opposite door. अब एक तरफ से ये लोग आए, the girls की line, they came inside, and from the opposite end, the line of the boys, they came in. I watched for the 3 young braves who came in our party. और उसने suddenly देखा कि 3 लड़के, उन्होंने अपनी क्यू चेंज कर दिया, अपना लाइन चेंज कर दिया, and they joined the girls line. I spied them in rear ranks. Rear ranks मतलब पीछे, लाइन में पीछे खड़े हुए थे, looking as uncomfortable as I felt. And please make a note that the boys were as uncomfortable as Zitkalasa was feeling. So this uncomfortable word over here has been referred to the boys. Are we clear, children? So here you know about, we came to know about the basic of the Carlisle Indian School, apparently, okay, who all are there, what are they wearing. A large bell has gone for breakfast and everybody has now come in the dining room. और अब देखो क्या होता है, and please keep marking. A small bell was tapped, एक छोटी सी bell tap हुई, and each of the pupils drew a chair from under the table. जैसे एक छोटी सी bell पे टिंग करके tap हुआ, सबने अपनी अपनी chair टेबल के अंदर से निकाला. Supposing this act meant that they were to be seated, I pulled out mine and at once slipped into it from one side. अब Zitkalasa को लगा कि भाई चेयर पुल कर रहे हैं तो बैठने के लिए कर रहे होंगे, तो Zitkalasa ने भी जल्दी से चेयर निकाली और वो उस पे बैठ गई. ठीक? But when I turned my head, I saw that I was the only one seated. बट अब ये बेल बैठने के लिए नहीं थी, ये बेल थी सिर्फ चेयर निकालने के लिए फ्रॉम अंडर द टेबल. तो सिर्फ Zitkalasa बैठ गई थी, बाकी सब खड़े हुए थे. नाउ जस्ट इमेजिन हाउ एम्बैरेसिंग द सिचुएशन वाज. एंड ऑल द रेस्ट एट आवर टेबल रिमेन्ड स्टैंडिंग. Just as I began to rise, looking shyly around to see how chairs were to be used, अब बड़ा शर्माते हुए घबराते हुए भाई वो उठी कि भैया यहाँ चेयर्स यूज करने का क्या रूल होता है पता ही नहीं है. इमीडिएटली क्या हुआ, अ सेकेंड बेल वॉज साउंडेड, दूसरी बेल बजी. और इस सेकेंड बेल पे क्या हुआ चिल्ड्रन, ऑल वर सीटेड एट लास्ट एंड आई हैड टू क्रॉल बैक इनटू माय चेयर अगेन. तो मतलब क्या हुआ कि जो स्मॉल बेल थी, इट वॉज जस्ट टू pull the chair from under the table, and when the second bell was sounded, you were then supposed to sit. Are we clear till here? ये जो मैंने 1, 2, 3 यहाँ highlight करा हुआ है, even you are supposed to do that class 12th, okay? Now, बैठ गए हैं सब बच्चे. I heard a man's voice at one end of the hall. Now this is a man, and apparently this man is saying a prayer before the meal. So she could hear his voice, and I looked around to see him, but all the others hung their head over their plates. अब breakfast करने से पहले they are all saying their prayers, they are all saying their grace. तो
तो सबकी आंखें बंद हैं, सबके सिर झुके हुए हैं. दे आर सेइंग देयर प्रेयर्स बिफोर द मील. खाने से पहले जो है आप प्रे करते हैं, यू थैंक गॉड. सो इट इज सेइंग ग्रेस और सेइंग द प्रेयर. ठीक है. As I glanced at the long chain of tables, I caught the eyes of a pale-faced woman upon me. अब the same pale-faced woman जिसका जिक्र यहाँ हुआ है. तो जब सब लोग प्रेयर कर रहे थे, सबकी आंखें बंद थी, सबका सिर झुका हुआ था, तो जितकलासा आगे को देखने लगी, तो उसकी आईज किससे मिली? With the same pale-faced woman. Immediately I dropped my eyes. Immediately वो डर गई, उसने अपनी आंखें नीचे करी. Wondering why I was so keenly watched by the strange woman. And she starts wondering कि ये क्यों मुझे इतना ज़्यादा जो है, she is staring at me. Okay? The man ceased. Con man who was saying the prayers over here. Ceased मतलब he stopped. Prayer हो गई. And then mutterings, जो भी वो prayer बोल रहा था, और फिर क्या हुआ? A third bell was tapped. First bell, pull the chair. Second bell, sit in the chair. Then you have the prayer. The third bell was again tapped. और third bell का indication क्या था? Everyone picked up his knife and fork and began eating. So the third bell meant that now you can eat. And please make a note here, my dear children. Everybody is eating with knife and fork. That's the American way of eating. Do not forget that everybody here is being trained to be like proper Americans. अब सबने तो खाना शुरू करा, बट ये आए कौन है? हमारी नरेटर. कौन? जितकलासा. I began crying instead. उसने रोना शुरू कर दिया. She was so embarrassed and she was so, literally irritated and she didn't know what to do. I began crying instead, for by this time I was afraid to venture anything more. क्योंकि उसको ये सब कुछ इतना डिफरेंट लग रहा था कि ये सब क्या हो रहा है. Pulling chairs with bell, and then she says, but this eating by formula, वो ये जो बेल्स बज रही हैं, किस बेल पे क्या होना है, किस बेल पे क्या होना है, किस बेल पे क्या होना है, इसको वो बोलती है क्या? ईटिंग बाय फॉर्मूला. एंड डू वी डू दिस इन आवर होम्स? नो, ऐसा नहीं होता है. जब हम अपने घर में होते हैं, जब हम अपने फ्रेंड्स के साथ हैं, फैमिली के साथ हैं, ऐसा नहीं होता है कि एक बेल बजेगी तो ये होगा, दूसरी बेल बजेगी. नो. बट देन यस, दिस वॉज द कार्लाइल इंडियन स्कूल एंड इट वॉज द बोर्डिंग स्कूल. तो यहाँ पे सब कुछ ऐसा ही था. ओके. But this eating by formula was not the hardest trial in that first day. वो बोलती है ये जो eating by formula था, जो first day था कार्लाइल इंडियन स्कूल में, ये उस दिन का सबसे ज़्यादा hardest trial नहीं था, या सबसे ज़्यादा मुश्किल एपिसोड नहीं था. आगे देखो अब क्या होगा. Late in the morning, my friend Judwin, so she is accompanied by another girl, her name is Judwin, gave me a terrible warning. Judwin ने जितकलासा को एक warning दी. अब कैसे? Judwin knew a few words of English. Judwin को थोड़ी बहुत इंग्लिश आती थी, and she had overheard the pale-faced woman talk about cutting our long heavy hair. जूडविन ने सुना, उसको थोड़ी सी इंग्लिश आती थी, कि ये जो पेल फेस्ड वुमन थी, जो यहाँ पे भी थी, ठीक है, और यहाँ पे भी थी, इनको देख के घूर रही थी ना वो, तो जूडविन ने बताया कि ये पेल फेस्ड वुमन कह रही थी कि जो हमारा, देखो देयर इज अ लाइन माय डियर चिल्ड्रन, इट सेज कटिंग आवर लॉन्ग हैवी हेयर. बाल सिर्फ लॉन्ग नहीं थे, दे वर वेरी वेरी हैवी एज वेल. ओके. सो cutting our long heavy hair. This is what the planning was going on, that they are going to cut the long heavy hair of these girls. Kaun? Judwin and Zitkalasa. And now in the following lines here you will come to know about the tradition of their tribe.
कि बालों की कितनी इंपॉर्टेंस थी इनकी ट्राइब में. ठीक है, प्लीज पे अटेंशन. Our mothers had taught us that only unskilled warriors, इनकी ट्राइब में इनकी मदर्स ने इनको बताया था कि जो अनस्किल्ड वॉरियर्स होते हैं, ठीक है, जिन्हें लड़ाई करनी नहीं आती, जो वॉरियर्स नहीं है, सोल्जर्स नहीं है, who were captured, जिनको पकड़ लेते थे लड़ाई में दूसरे लोग, had their hair shingled by the enemy, उन लोगों के बाल शिंगल करे जाते थे. और कौन शिंगल करता था? वो एनिमी जो उनको कैप्चर कर लेते थे. ठीक है, सो सी अगेन आई एम कमिंग बैक टू दिस वर्ड शिंगलिंग ओवर हियर. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो इन द ट्राइब ऑफ जितकलासा देयर मदर हैड टोल्ड कि शिंगलिंग किन की होती है? शिंगलिंग उन अनस्किल्ड वॉरियर्स की होती है जिनको लड़ाई में दूसरे जो एनिमी सोल्जर्स पकड़ लेते हैं उनके बाल शिंगल किए जाते हैं. ठीक. अमंग आर पीपल, हमारे लोगों में, हमारी ट्राइब में, हमारे कल्चर में, शॉर्ट हेयर वॉज वोर्न बाय मोर्नर्स. प्लीज पे अटेंशन. छोटे बाल कौन रखता है? जो किसी के लिए मोर्निंग कर रहा हो, किसी की कोई डेथ हो गई हो, वो मोर्निंग में अपने बाल छोटे करता था. मोर्निंग क्या होती है बेटा? मातम करना किसी के लिए. ठीक है. So short hair was worn by mourners and shingled hair by cowards. डरपोक. ठीक. तो shingled hair किसकी निशानी थी? Shingled hair was worn only by cowards. जो unskilled warriors थे, जिनको लड़ाई करनी नहीं आती थी, जिन्हें कुछ करना नहीं आता था और उनको enemy soldiers पकड़ लेते थे. So shingling was like really a very very shameful thing. ठीक. तो is it clear? Our mothers had taught that only unskilled warriors who were captured, they would have their hair shingled. और छोटे बाल कौन रखता था? जो मोर्निंग कर रहा हो. बाकी सबके बाल कैसे होते थे? लॉन्ग एंड हैवी. In the Native American tribe from which Zitkalasa belonged, to which she belonged, from which she hailed. तो अब ये बात जूडविन ने आकर के जितकलासा को बताई. We discussed our fate some moments, and when Judwin said, "We have to submit because they are strong," I rebelled. जूडविन ने कहा कि देखो भाई, कुछ नहीं कर सकते, हमको सबमिट करना ही पड़ेगा. सबमिट मतलब गिव इन, गिव अप करना पड़ेगा. Why? Because they are strong. ये दे कौन है? Everybody who was running the Carlisle Indian School. In this case, the pale-faced woman and the other people along with her. जूडविन बोली क्या कर सकते हैं यार, कुछ नहीं कर सकते, हमें कटाने ही पड़ेंगे बाल. But जितकलासा said, I rebel. बोलती है नहीं, मैं तो नहीं कटवाऊंगी. No, I will not submit. I will struggle first. बोलती मैं तो कोई सबमिट नहीं करूंगी, मैं तो स्ट्रगल करूंगी. I am going to struggle. मैं तो लड़ाई करूंगी. I answered. और ये जूडविन की और जितकलासा का कॉन्वर्सेशन हो गया. I watched my chance and when no one noticed, I disappeared. अब जितकलासा ने क्या करा? वो चुपचाप सब कुछ नोटिस करती रही और जैसे ही जितकलासा को मौका मिला वो वहां से गायब हो गई. I crept up the stairs. धीरे धीरे उसने सीढ़ियां चढ़ी. As quietly as I could in my squeaking shoes. अब देखो, जितकलासा के मोकैसन्स ले लिए इन लोगों ने और उसको वो शोर मचाने वाले स्क्वीकी शूज दे दिए हैं. ठीक. My moccasins had been exchanged for shoes. Very clearly it's written here. तो वो चुपचाप सीढ़ी चल करके ऊपर कहीं पे आ गई है. Along the hall I passed without knowing whither I was going. Whither मतलब where. So she has come to a hall and she has no idea where she is going. Turning aside to an open door, I found a large room with 3 white beds in it. अब she opened a door. एक बहुत बड़ा रूम था और उसमें 3 white beds थे. The windows were covered with dark green curtains which made the room very dim. और उस पे curtains पड़े हुए थे windows में, तो उसमें अंधेरा हो रहा था. So she goes into that dim room. Thankful that no one was there, I directed my steps towards the corner farthest from the door. तो बिल्कुल कॉर्नर में चली गई, वो दरवाजे से बिल्कुल दूर कॉर्नर में इन द रूम. ऑन माई हैंड्स एंड नीज आई क्रॉल्ड अंडर द बेड. और जैसे आप इमेज में देख रहे हैं, एक बेड के नीचे ये लड़की जाके अपना छुप गई.
and huddled myself in the dark corner. Huddled क्या होता है बेटा? कर्ल अप करना, अपने अपने पैरों को ऐसे अपने पेट के पास ला करके, you know, to fold yourself with your arms. She got into the corner of the bed. जाके ये छुप गई. Now the question is कि जितकला सा जाकर के छुप तो गई है, बट क्या ये पॉसिबल है कि जितकला सा नहीं ढूंढने में आएगी या नहीं पकड़ी जाएगी? Obviously they will be able to find her. Now please understand, this girl is a rebel. She is not ready to give in. She is not like Judwin. Judwin की तरह उसने नहीं कहा कि we have to submit. She said I will rebel. और इसलिए she is trying to hide. So she came up in this hall and under this bed she is hiding. Now please imagine the mental state of this girl, जिसे जबरदस्ती तो उसके घर से ले आए हैं इस बोर्डिंग स्कूल में, फिर उसके बाल काटने की बारी हो रही है, वो कुछ खा नहीं पाई है, उसको ये सारा कल्चर समझ में नहीं आ रहा है. So she is quite traumatized. She is not at peace. From my hiding place, I peered out. वहाँ उसने अपने जहाँ छुपी हुई थी उसने बाहर झाँका. Shuddering with fear. Shuddering is shivering. कांप रही थी. She was shuddering with fear whenever I heard footsteps nearby. जैसे उसको किसी के कदमों की आवाज आती थी, she started shivering. Though in the hall, loud voices were calling my name. और सब उसकी आवाजें लगा करके उसको ढूंढना शुरू कर रहे थे. And I knew that even Judwin was searching for me. सब ढूंढ रहे हैं उसको. I did not open my mouth to answer. वो चुप बैठी रही मेरे बेड के नीचे. Then the steps were quickened and the voices became excited. अब क्या हुआ? और आवाज आने लगी लोगों के कदमों की, and the voices they became excited as in they were frantically calling out her name. अब इसको ऐसे समझो बेटा कि कभी ना कभी आप लोगों ने हाइड एंड सीक खेला होगा, छुपन छुपाई, है ना? अगर उस गेम को ही खेलने में इतनी घबराहट हो जाती कि अरे हम पकड़े जाएंगे, तो जस्ट इमेजिन व्हेन यू आर हाइडिंग टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ एंड यू आर हाइडिंग टू प्रोटेक्ट योर आइडेंटिटी, क्योंकि आपकी ट्राइब में आपके बालों की बहुत इंपॉर्टेंस है एंड यू आर नॉट अ कावर्ड. So this girl is bound to have these feelings of fear and nervousness and anxiety and shivering. The sounds came nearer and nearer. आवाजें और पास आने लगी. Women and girls entered the room. और क्या हुआ? Women and girls entered the room. I held my breath and watched them open closet doors and peep behind large trunks. This is important. इस पे question आ जाता है कि what was the condition of Zitkala Sa? What was she feeling when she was hiding there? अब वहीं बेड के नीचे छुपी हुई है, बहुत डर रही है और देख रही है कि सब लोग क्या कर रहे हैं. क्लोजेट क्या होती है बेटा? कबर्ड्स ओपन कर रहे हैं, क्लोजेट के डोर्स देख रहे हैं कि अलमारी में तो नहीं छुपी हुई है. बड़े बड़े ट्रंक्स रखे हैं वहां, बॉक्सेस, उसके पीछे झांक के देख रहे हैं कि वहां तो नहीं छुप गई. Someone threw up the curtains. किसी ने उस रूम के सारे कर्टन्स हटाए और जैसे ही कर्टन्स हटाए क्या हुआ? The room was filled with sudden light. Obviously, पूरे रूम में क्या हुआ? रोशनी हो गई. What caused them to stoop and look under the bed? I do not know. Now Zitkala Sa कहती है मुझे नहीं पता कि क्या उनके दिमाग आया. Stoop means to bend forward. कि किसी ने झुक करके वहीं बेड के नीचे देखा एंड द सेम बेड जहां जितकला सा वॉज हाइडिंग राइट हियर. तो झुक करके किसी ने देखा और देखा कि हाँ जितकला सा वॉज हाइडिंग अंडर द बेड. एंड नाउ द पेन, द ऑर्डील बिगिंस, एंड दीज वर्ड्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. Please pay attention. I remember being dragged down. ये आपको लर्न करना पड़ेगा सब. Dragged मतलब खींच के ले जाना, घसीट के ले जाना. I remember being dragged out. खींच के उसको बेड के नीचे से निकाला. Though I resisted by kicking and scratching wildly. उसने रेजिस्ट करा जितकला सा ने. कैसे करा? She was kicking.
Okay, and what was she doing? She was scratching wildly. Yes, kicking and scratching wildly. नहीं चाहती थी कि वो कोई उसको पकड़ ले. In spite of myself, I was carried downstairs and tied fast in a chair. और इन स्पाइट कि वो खूब किकिंग कर रही थी, खूब उन लोगों को नोच रही थी, हाथ पैर फेंक रही थी, उसको जबरदस्ती उठा के नीचे ले गए और एक चेयर से बांध दिया. See, it's written clearly over there. She was tied fast in a chair. Just imagine, children. Can you even think about it? How painful it must have been. कितना traumatizing है ये. Please try and feel the pain of Zit Kalasa at this point of time. Only then you can understand. I cried aloud, shaking my head all the while. And she's shaking her head and she's crying. Until I felt. कब तक उसने ये शोर मचाया, ये रोना धोना करा? कब तक? She felt the cold blades of the scissors against my neck. अब नेक पे सिजर्स कब फील होंगी? जब बाल आपके बिल्कुल जड़ से काटे जाएंगे, है ना? तभी तो वहां नेक पे सिजर्स फील होगी. दैट इज शिंगलिंग. प्लीज रिमेंबर. तो शी फेल्ट द कोल्ड ब्लेड्स ऑफ सिजर्स अगेंस्ट हर नेक एंड हर्ड देम नो ऑफ. जी इज साइलेंट, तो उसको बोलेंगे नो ऑफ. नो ऑफ मतलब, नो का मतलब होता है बाइट ऑफ. ओके. वन ऑफ माई थिक ब्रेड्स. उसने 2 ब्रेड्स बनाई हुई थी, 2 प्लेट्स बनाई हुई थी और जड़ से बेटा उसकी एक प्लेट को बिल्कुल गर्दन के पास से इट वॉज नॉड ऑफ. यस. और तब द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन हियर जिसको मैंने हाईलाइट करा है, देन आई लॉस्ट माई स्पिरिट. और तब जित कलासा कहती है कि आई हैड लॉस्ट माई स्पिरिट. लॉस्ट माई स्पिरिट मतलब मेरी बिलोंगिंग, मेरा ट्रेडिशन, मेरा कल्चर, मेरी ट्राइब की प्राइड, वो सब कुछ खत्म हो गया. इसको ऐसे आप समझें कि कोई बहुत ही डिवाउट ब्राह्मण है, उस ब्राह्मण को आपने मीट खिला दिया, उसका तो धर्म भ्रष्ट हो गया ना. नॉन वेज खिला दिया आपने. तो इट इज समवॉट लाइक दैट. आई लॉस्ट माई स्पिरिट. बोलती मेरा सब कुछ वहीं खत्म हो गया. क्यों? क्योंकि हेयर वॉज वेरी इंपॉर्टेंट इन हर ट्राइब. और शिंगलिंग ऑफ हेयर तो कावर्ड लोगों के लिए था. शी वॉज नॉट अ कावर्ड, वो तो रिबेल थी, राइट? और ये मोस्ट टचिंग लाइन्स हैं ऑफ हर अकाउंट. वेरी वेरी इमोशनल. Since the day I was taken from my mother, I had suffered extreme indignities. कहती जिस दिन से मुझे मेरी मम्मी के पास से, मेरी मदर से जबरदस्ती ले गए थे. कौन ले गया था? ये कार्लाइल इंडियन स्कूल वाले, the Americans. I had suffered extreme indignities. कहती I had gone through lot of indignities. People had stared at me. Okay? Obviously she's feeling so uncomfortable. And now my long hair was, people had stared at me. I had been tossed about in the air like a wooden puppet. This line tells you कि उसका अपना तो कोई freedom था ही नहीं ना. She was like a wooden puppet. Puppet कैसा होता है? जैसा string आप हिलाएंगे, puppet ऊपर नीचे हाथ पैर करेगा. तो she is saying कि I was tossed about in the air, मतलब I was being made to do things which I did not want to do. जबरदस्ती पहले घर से ले गए, उसके बाद they are made to wear such clothes in which she is not comfortable. Her moccasins are taken. She's given these squeaky shoes. People are staring at her. She's a young girl. And she compares herself with a wooden puppet. And the word like is here and you are in 12. Tell me what is the figure of speech here or the literary device? It is simile. कठपुतली से कंपेयर कर रही है अपने आप को, बिकॉज अ वुडन puppet has no will of its own. And now my long hair was
shingled like a coward's. और बोलती और अब फाइनली मेरा जो लॉन्ग हेयर था उसको बिल्कुल कावर्ड्स की तरह शिंगल कर दिया, जैसे मैं कितनी डरपोक हूं. वो नहीं थी डरपोक, शी वॉज नॉट अ कावर्ड. इन माई एंग्विश, एंग्विश मतलब इन हर पेन, शी सेज इन माई एंग्विश I mourned for my mother. She was crying for her mother, missing her mother. But no one came to comfort me. और उसके इस पेन में, उसकी इस तकलीफ में कोई उसके पास नहीं आया उसको कंफर्ट करने के लिए. Not a soul reasoned quietly with me as my own mother used to do. कोई उसके पास प्यार से बैठ के उसको समझाने या उसके साथ रीजनिंग करने नहीं आया जैसे उसकी मदर आती थी. आप लोग परेशान होते हैं, तकलीफ में होते हैं, पेरेंट्स आते हैं ना आपसे बात करने, मत परेशान हो, सब ठीक हो जाएगा, वी आर देयर फॉर यू, एवरीथिंग इज गोना बी ओके. बट नोबडी केम टू हर. किसी ने आके उस लड़की से ये नहीं कहा कि अरे डोंट वरी, बाल ही तो हैं, फिर से आ जाएंगे, दे विल ग्रो अगेन. नोबडी डिड दैट like her own mother used to do. And in the end she says, my children, please pay attention, for now I was only one of many little animals driven by a herder. बोलती और अब मैं अपनी ट्राइब, अपनी कम्युनिटी का हिस्सा नहीं थी. I was like many little animals. She is using metaphor over here. बोल रही है मैं बहुत सारे उन एनिमल्स की तरह हो गई थी जो ऑलरेडी वहां पे थे. ड्रिवन बाय वन हर्डर. हर्डर कौन होता है बेटा? आपका जैसे चरवाहा होता है ना, जो सारे एनिमल्स को लीड करता है. She is saying that I was just like one of the many little animals. These little animals, they do not have the freedom of thought and will. जहां उनका चरवाहा उनको डायरेक्शन देगा, वो भेड़ बकरियों की तरह उस तरफ चल देंगे. So that is how she concludes it, that I was one of many little animals. Many little animals क्यों? क्योंकि in the Carlisle Indian School, as I had told you over here while I was giving you the description, that they had taken over 10,000 Native American children. 140 ट्राइब्स में से उठा करके जबरदस्ती ले गए थे. So I would want each one of you to please Google about the Carlisle Indian School. Very very important. तो समझने में चीजों को और अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी कि आखिर वहां पे कितना पेन था बच्चों के लिए. Just because you wanted to train them to be like pure Americans, to follow the American culture, आपने उन बच्चों पे इतनी एक्सट्रीम इंडिग्निटीज को फोर्स किया, राइट? सो दिस वाज द अकाउंट ऑफ जिद कलासा, एंड उसको उसने टाइटल दिया है द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर. इसी के बाद बेटा अगर अब इसको आप समझोगे तो जब जिद कलासा वॉज आउट ऑफ देयर, तभी उसने फिर यहाँ पे क्या करा, 1900 से उसने आर्टिकल्स पब्लिश करने शुरू करे जिद कलासा ने. किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट द कार्लाइल इंडियन स्कूल. और अपने हर काम में उसने क्रिटिसाइज करा कि कैसे नेटिव अमेरिकन वुमन के ऊपर इतना ऑपरेशन किया गया थ्रू द कार्लाइल इंडियन स्कूल, थ्रू दिस अमेरिकन यूरोपियन कल्चर, just because Zid Kalasa was from a marginalized community. वो मेन स्ट्रीम कल्चर को नहीं बिलोंग करती थी, वो प्योर रेस नहीं थी. शी वॉज नॉट अ प्योर अमेरिकन. सो दिस माई डियर स्टूडेंट्स was the first account of Zid Kalasa, that is Gertrude Simons Bonnen. I want you to go through it. कहने को तो स्टोरी बहुत सिंपल है, बहुत कुछ टिपिकल नहीं है, बट देन what needs to be understood here is the pain in these paragraphs that Zid Kalasa went through. What you need to understand is the pain she felt when she says these lines. What you need to understand is the pain she says
when she calls herself a wooden puppet, when she is mourning for her mother. As a child, she wants to go back home, but she cannot. तो इसको जब हम समझेंगे तब हम समझ पाएंगे कि हाउ पेनफुल इट वॉज फॉर दीज चिल्ड्रन ओवर देयर, दीज 10,000 चिल्ड्रन फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज फ्रॉम ओवर 140 tribes. Okay, children, so today we have completed the first account. I will be sending you images and little details of the Carlisle Indian School, and today's homework is to do research on the Carlisle Indian School. इस पे रिसर्च करेंगे और अपने लिए मैटर हम कलेक्ट करेंगे कि क्या कार्लाइल इंडियन स्कूल था, ठीक है, कैसे एग्जिस्टेंस में आया, एंड इट वाज रन बाय जनरल हेनरी प्रैट. क्या क्या सिचुएशन थी जनरल हेनरी प्रैट की, थोड़ा हिस्टोरिकल अकाउंट हम इसका निकालेंगे. दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे. Fine, dear children. So have a nice day. I hope you have understood it. In case if there is any query, any problem, you know how to get to me. So take care and please do the research on the Carlisle Indian School. Take care.